बढ़िया आपको देखागा जी। आज तो स्टार्ट करते हैं जी जी। हाँ, कर लो कोई बात, ठीक है। ओके, नमस्कार सभी को। आज 12 फरवरी 2023 संडे, ये 12 नून जो हमारी राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज, ये हम सभी एक्सपर्ट के साथ जो करते हैं। और आज हमारा जो राउंड टेबल डॉक्टर के HCFI, इसमें हमारा सब्जेक्ट है ग्रीन इनिशिएटिव्स इन द यूनियन बजट 2023-24। अभी जो रिसेंटली 31 अभी जनवरी को जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट अभी पेश किया, देयर इज ए नंबर ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिए हुए थे। तो इसकी बैकग्राउंड के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो सभी लोगों ने न्यूज़ डिफरेंट मीडिया से, डिफरेंट न्यूज़पेपर से और इसके डिटेल में जाके नेट्स पे देखा होगा कि इंडियन बजट फॉर 2023-24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिकेटेड इट्स कमिटमेंट टू ग्रीन ग्रोथ एंड ऑल्सो एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। वेरी क्लियर इसमें दिखा। और यूनियन बजट 2023-24 is basically addressing the issues of both global warming and also moving towards a more sustainable future. Green growth has been identified as one of the 7 key priority जो सप्तऋषि है जो उसमें है। This is one of the 7 key priority of the budget. Particularly green energy में या energy security में, this indicates that a capital investment of rupees 35,000 crores being made by Ministry of Petroleum and Natural Gas towards energy transition, net zero goals and energy security. This indicates India's green initiative. That was it. And an investment of rupees 20,700 crores for the creation of interstate transmission system for the evacuation of 13 gigawatt of the renewable energy from Ladakh indicates a new era for the renewable energy. Recently, we launched the green hydrogen missions with a budget per provision of rupees 19,700 crores, will help to reduce the carbon intensity of the economy and also reduce the dependence on the fossil fuel import. That is. There are various other important green initiatives. These includes the natural farming that अभी सभी देखा होगा. This is to facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. ये एक बहुत बड़ा मतलब this is towards the on the ground that way. Also the Govardhan scheme to promote circular economy by creating 500 new the waste to wealth plants. That way. Green mobility में the battery energy storage system with a capacity of 4,000 megawatt hour with a viability gap funding, and also this including adequate funds for the scrapping old government vehicles. इसमें बहुत से जो गवर्नमेंट की और प्राइवेट में भी lot of incentives also, and the scheme has been formulated for both the government, the old vehicles and the private old vehicles by adopting a scrapping policy. That way. Union Budget 2023, basically we can say 23-24, present a promising outlook for the future of India's environment and sustainable development. Also, the Honorable Prime Minister's vision for life, that lifestyle for environment, will move India towards an environmentally conscious lifestyle. That is. So already from the, we can say, last couple of years, India is moving in this direction, but particularly recently launched Union Budget, a lot of green initiatives that is very good for the whatever the for environmentalists and the our group. A number of the expert members are here, so we'll discuss with these our expert members and how the budget is there, but and the ground implementation and the
expenditure towards this green budget, particularly or in the green initiative, and the whatever there will be challenges and other issues. We'll discuss this. So I think this is very good initiative. तो आज हमारे बीच में हमारे ट्रस्टी विवेक कुमार जी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और हमारे HCFI डॉक्टर के HCFI आर्टिकल फाउंडेशन इंडिया में इनका एनवायरमेंट डिवीजन को प्रमोट करने में इनका ही मेन हाथ है. मैं तो इनके ही मार्गदर्शन में काम करता हूं. तो आज मैं बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो पहले हम सबसे पहले विवेक जी से सुनना चाहेंगे जो ये ग्रीन इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं पर्टिकुलरली इस बजट में और जो पहले से ऑलरेडी लिए गए थे, तो क्या एक्चुअली ग्राउंड में इसका इम्पैक्ट होगा और हमारे सिटीजन्स को भी इसमें किस तरह से और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए. ओवर टू विवेक कुमार जी. Namaskar to all the viewers. Thank you, Dr. Anil Kumar ji. More than me, I would say is Dr. Anil Kumar ji, who has been taking this flagship of environment forward, and he's very passionate about it. And I would say ki if taking this ab ki baar, yes, the government has done a lot of conscious effort in bringing forward ki we have to take certain initiatives on environmental front, just not by lip saying, but they have also done a lot of positive things like asking the government to replace the old vehicles, which is a very big thing. But the most important thing ये होगा कि ये जो पुरानी गाड़ियां जो गवर्नमेंट रिप्लेस कर रही है, इनकी recycling कैसे होगी? The recycling of the old vehicles is also very important, especially plastic parts, and there are certain hazardous waste which comes out of the vehicles. They need to be properly recycled. And secondly, you know, the cellular economy is very, very important, which the government has to try and implement. I was there in the previous meetings also where it was very clearly defined that even though single-use plastic ka ban ho gaya hai, but actually on the ground level it has not happened, and there is a lot of wastage of there's a lot of wastage which is taking place, and this is a big problem, and these are certain things we have to see. So I would always say ki we all as citizens have to make a conscious effort, because at the end of the day, government has a certain restriction and the government cannot do any and everything. Secondly, I think even till the poor level, a consciousness has to be developed among the people ki how hazardous the plastic and everything is for the people. Of jaise microplastic is there, and the microplastic has started entering into our bloodstream and onto our organs, which is also harming us as individuals, and it is causing cancer and kidney failure and liver problem. So I don't think there is any citizen in India, rich or poor, who is not getting affected by the air pollution, regardless. आप अपने घर में air purifier लगा लीजिए, आप water purifier लगा लीजिए. Water purifier के through भी microplastics are going, and then you are drinking. So I think every human being now is getting affected, and I'm sure we all, I think if 99% of the human beings, what I've been told, at least living in India, have microplastic in their body. So it is a very grave situation. It's a very serious situation, and you know, the only way we can do is that by taking some very serious, impactful actions on this, because otherwise it's going to become more and more difficult. We will all be suffering with more diseases, and definitely we'll be living more with more diseases than we will be having a comfortable life. Hence, the purpose of Heart Care of Foundation of India was always to combine environment with health, and that is what Dr. KK's primary aim was, ki how environment affects the health of the human beings. And his aim was that to bring consciousness among the citizens that
listen, the environment does affect your health and every individual is getting affected. And that is our primary aim through Heart Care Foundation, how to create awareness and what we can do to reduce the effect. And for this, I must compliment Dr. Anil Kumarji has been very consistently doing an excellent job. And I would like to hand over to him to take this forward. Thank you. Thank you, Vivek ji. Always your blessing to the HCFI group and everybody. So thank you so much. Now I'll request the Shyam Gupta ji, who is the very experienced person in this field and done a lot of work in the air pollution things like. Sir, ये जो अभी बजट में particularly also provision of the like old vehicles and ऐसे और air pollution में the number of steps are being taken. तो particularly इस बजट में आपके अकॉर्डिंगली और ये सफिशिएंट है या और कुछ होना चाहिए था वैसे समथिंग और जो अनाउंस किए गए उसका बजट के इम्प्लीमेंटेशन में और क्या इश्यूज है तो ओवर टू श्याम गुप्ता जी और ऑन दिस टू दिस टॉपिक दैट वाज गुप्ता जी आपका म्यूट है सर एसके गुप्ता जी हेलो हेलो चलिए आई थिंक उनका डिस्कनेक्शन हो गया है कनेक्शन मे बी दी कनेक्टिविटी पुअर सो बिफोर गोइंग फर्दर मैं डॉक्टर सावत हमारे कलीग हैं इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दी टुडेस टॉपिक डॉक्टर बीसी सावत थैंक यू अनिल जी मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे थे बजट में आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ schemes has been devised by the government of India, but how it will be implemented in the ground level, that to be seen. Though it has been declared, but how far it will be coming to the nearby or to the lower level, that should be seen. And another problem is hello. आनंद सावत yes आई थिंक उनका भी कुछ कनेक्शन क्या है हेलो गुप्ता जी आप हाँ म्यूट है गुप्ता जी एसके गुप्ता जी मेरा अब आ रही है आवाज क्या हाँ आ रही सर हेलो हाँ the another thing is that because it has been included in the budget, but how far we can reach it to the ground level, that to be seen. And the most of things they have given to the state governments, and state governments are not able to percolate in the ground, because I have seen in the rural level, and whenever we see in the ground level, nobody knows what is happening to these things. So I think that would be very nice thing if you can see how we can reach to the public and the general public, particularly in the lower level. So that to be seen. Particularly like Dr. Sawat, natural farming का because this is the इसमें जो facilitate करना है more than 1 crore farmers को to adopt a natural farming, but how the practically until unless a real very good mechanism is not developed with the block level and it is not going to be seen in particularly, so there is a lot of gaps but maybe we do to fill that. Yes, that is there. जी चलिए थैंक यू डॉक्टर सावत और आप आई थिंक ऑलरेडी आप उड़ीसा में अपने एक नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल में जो है काऊ वगैरह का उन्होंने भी किया हुआ है आपने ऑलरेडी किया हुआ है I am doing in the village, but I think nobody in the government, in the block level, district level, they don't aware about these things. That's why my concern is there. थैंक यू सो गुप्ता जी नाउ सॉरी आपको थोड़ा सा एसके ओवर टू एसके गुप्ता जी नहीं थैंक यू वेरी मच अनिल जी आपको नमस्कार बाकी लोग सब लोग अगर अनम्यूट कर ले अगर जो और आवाज आ रही है तो अगर अनम्यूट कर ले तो डॉक्टर गुप्ता जी कहिए 0984 है और एक एलजी का फ्रिज है जिसे रिक्वेस्ट सर त्यागी सर थोड़ा अनम्यूट कर ले सर प्लीज हाँ गुप्ता जी आप उसकी चिंता ना करें आई थिंक त्यागी सर की आवाज आ रही है कोई बात नहीं वो शायद किसी से बात कर रहे हैं हाँ बात कर रहे हैं जी चलिए हाँ ठीक गुप्ता जी सर जी मैं तो एक्चुअली जो आज ज्वाइन किया इसलिए किया कि मैं खुद जानना चाहता था कि क्या ऐसे ग्रीन इनिशिएटिव हैं
जो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए यूजफुल हैं या पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल हैं। तो मुझे लगता है कि काफी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिमाग में काफी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन मुझे लगता है क्लियर नहीं है, और वो नॉन क्लैरिटी की वजह से कुछ इस तरह के इनिशिएटिव अनाउंस करते हैं, इससे ऐसा लगता है कि जैसे वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब जैसे स्क्रैपिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वाली बात, क्या इज इट रियली ग्रीन इनिशिएटिव? कोशिश लगता है कि सैचुरेशन पॉइंट आने लगा होगा व्हीकल मैन्युफैक्चरर को, यार और गाड़ियां कैसे बिकेंगी। तो जब तक स्क्रैप नहीं करोगे तो नई गाड़ियां कैसे आएंगी। तो ये इट इज टू, मेरे हिसाब से इट इज नॉट ए boost to promote green initiative, but it boosts to promote economic development. अगर ग्रीन इनिशिएटिव नहीं था मोदी सेक्टर तो उनका ये थी चीज नहीं होंगी, ऑलरेडी उस पर है, बजाय हमने वो इनिशिएटिव के। आई थिंक थोड़ा नेट का उत्तर, आपकी आवाज थोड़ी सी, हेलो, लग रहा है नेट प्रॉब्लम है। नेट प्रॉब्लम है। चलिए हम बाद में कर लेते हैं, और गुप्ता जी से बाद में विल टेक अप दिए फर्दर। सो मैं, चलिए नीरज जी से ही, अब नीरज जी हैं ऑलरेडी, और नीरज जी तो बहुत पढ़ते हैं करंट सब्जेक्ट पे। गुप्ता जी आपका नेट सर थोड़ा सा आ रहा है, पुअर है, तो आपसे थोड़ा सा बाद में टेकअप कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, हाँ जी। तो वो तो नीरज त्यागी जी, आपके व्यूज जो है ऑलरेडी यू गो डीप इन देयर सब्जेक्ट। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज जो लवकेश कुमार जी से, कि वो थोड़ा सा हमें आज जो है पर्टिकुलरली ऑथर है वो, तो डेफिनेटली जो है, और करंट सब्जेक्ट पे थोड़ा सा उनके व्यूज जाना चाहेंगे। उसके बाद ओवर टू नीरज त्यागी जी। जी जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अनिल कुमार जी को नमस्कार, डॉक्टर विवेक कुमार जी को नमस्कार, और हमारे परितोष त्यागी जी हैं, उनको भी, और सभी लर्नेड एक्सपर्ट सभी को प्रणाम। तो ये जो बजटिंग है, जो बजट आया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रीन बजटिंग कह सकते हैं, कि दिस ग्रीन बजटिंग एम्स टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स, पार्लियामेंट एंड पब्लिक with a clearer sense of the potential environmental impacts of budgeting choices. बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें गैप भी रह गए हैं, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे। कि इट इज noteworthy for the emphasis she has laid on the government's commitment to move towards net zero carbon emission by 2070. जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी एनुअल मीटिंग जो डावोस में लास्ट मंथ में हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि इंडिया होल्ड्स द की टू हिटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स गिवन इट्स साइजेबल एंड ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। और हमारा कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट को जगह दी गई है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विद द कंट्रीज पॉपुलेशन सेट टू ओवरटेक चाइना समटाइम दिस ईयर। हम चाइना से भी बड़ी पॉपुलेशन होने जाने, लार्जेस्ट country in the world as far as population is concerned, अभी कुछ महीनों में ही हो जाएंगे। India's appetite for energy to propel the economy is set to surge exponentially. The transition to green alternatives from the current reliance on fossil fuels is therefore an urgent imperative and an opportunity to leverage this move to catalyze new industries, generate jobs on a sizable scale, and add to overall economic output. In a nod to this, budget devoted a fair amount of space to the green industrial and economic transition needed. With the electrical vehicle revolution poised to take off as every automobile major rolls out new electrical vehicle models to tap the demand, the availability of indigenously produced lithium-ion batteries has become a necessity, especially to lower the cost of EVs.
The budget heartily proposed to exempt customs duty on the import of capital goods and machinery required to manufacture lithium-ion cells used in EV batteries. This ought to give a fillip to local companies looking to set up EV battery plants. Another key proposal relates to establishment of a viability gap funding (VGF) mechanism to support the creation of battery energy storage systems with a capacity of 4,000 MWh. Energy storage systems are crucial in power grid stabilization and essential as India increases its reliance on alternative sources of power generation, including solar and wind. With wind turbine farms and solar photovoltaic projects characteristically producers of variable electric supply, battery storage systems become enablers of ensuring the electricity these generators produce at their peak output is stored and then supplied to match the demand arriving at the grid from household or industrial consumers. So Mrs. Sitaraman also set aside a vital 8,300 crore towards a 20,700 crore project for building an interstate transmission system for the evacuation and grid integration of 13 gigawatt of renewable energy from Ladakh. With its vast stretches of barren land and one of the country's highest levels of sunlight availability, Ladakh is considered an ideal location to site photovoltaic arrays for producing a substantial capacity of solar power. लेकिन इसमें कुछ drawbacks में अभी 3 things stand out in the budget. It is the relationship between economy and ecology. One is the complete absence of following words in finance minister's budget speech: nature, wildlife, environment, ecology, ecosystem, pollution, and conservation, except uses such as business environment and growth ecosystem. Everything she talked about business. Second, it is a budget with a stated focus on climate action. Third, there is a massive rise in allocation for infrastructure projects with huge environmental implications. Seen together, these highlights demonstrate the deep contradictions in the government approach to sustainable development. Stay the course budget rather than transformation. कोई transformation inducing budget हम इसको नहीं कह सकते. Explaining that there is nothing in this budget that pushes the growth of renewable energy or increases the consumption of renewable energy in rural areas. This is not the budget, at least for clean energy. Green growth was given a lot of emphasis and schemes were announced for biogas or developing forests. But nothing as such came out of renewable energy. Apart from that, viability gap funding of 4 gigawatts of battery storage. The finance minister announced a green credit program to incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies. While the intention is to bring about behavioral change, experts said that there is a lack of direction. How this scheme will be implemented? There is no direction. The budget also talked about biodiversity conservation, including conserving wetlands, mangrove plantation, and natural farming. This is good. But I am confused about how it is classified as money for energy transition and net zero. Do they mean that gas, petroleum will help India's transition to clean energy? It remains to be seen how this money will be used, whether to push oil marketing companies in the green direction or for more gas exploration. In the current scenario, I wonder if India is betting on enhanced gas uses as a bridge fuel for renewable energy future. One of the major announcements the finance minister made was a capital investment of rupees 35,000 crore towards energy transition. The funds, though, would go to Ministry of Petroleum and Natural Gas. Of this, rupees 30,000 crore will go to oil marketing companies.
and the remaining rupees 5,000 crores will be spent on strategic petroleum reserves, confirms the budget document. While controlling energy prices and ensuring energy security is critical, India must ensure that financial support is directed towards low carbon technologies. It is laudable that the green growth framework used by the Honorable Finance Minister will guide investments in renewable energy, energy efficiency, and sustainable transportation. However, we need to identify the areas of environmental degradation and areas of economy where environmental degradation has the greatest impact and take steps to address them. The Economic Survey 2023 unfortunately did not have enough analysis on this front that could have informed the green budget. Several crucial programs such as Climate Change Action Plan, National Adaptation Fund, and the National Mission on Himalayan Studies found no allocation in this year's budget. This is drastic. Thank you, Neeraj ji. I think we'll come back to you again. Because we have the time, so we'll come back to you. So आपने बहुत डिटेल में given the great analysis of the and you gone very thoroughly. So we'll come back to you again. I think जो recently जो अभी Geological Survey of India का जो they have also found around 5.9 million tons of the lithium in Jammu and Kashmir. This is maybe the good transition toward the particularly battery or particularly toward EV policy that was on ground, because we are reporting that, and this was huge quantity of 5.9 million tons of the lithium in the JNK. I think will have a lot of the import substitution of the lithium, and this will be a very good initiative for you. So this is also welcome step. So thank you, Neeraj ji. Now I'll request today to Lavkesh Kumar ji, आपने एनालिसिस अगर किया हो, आपके व्यूज क्या हैं, देन आज मैं पार्थोस त्यागी सर से लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि सम अप के लिए, तो सर को आज हमने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं कि मैं आज सर से रिक्वेस्ट की उनके जो एज ए चेयरमैन रिमार्क्स जो है विल लिसन आफ्टर दैट जी. सो ओवर टू लवकेश कुमार जी. धन्यवाद अनिल जी. सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार. देखिए, मैं आई थिंक नीरज सर ने काफी एक अच्छी बात ये बताई कि जो 35,000 crores is allocated in the budget 2023, how effectively it is translated into the real mechanism of stopping carbon rather than these money is going to market petroleum marketing company or a large business. See, look at today our dependency on fossil fuel is around 60 to 70% on fossil fuel. So definitely, green energy is not a option, but it is a necessity for India. So I will welcome in that regard that at least budget is focusing on that. However, very limited point to budget is that it is not percolating down to the real issue. I mean, for example, still we talk about EV policies of states. I mean, what states are doing has other than the central government policies of incentive on EV vehicles. Not many states are doing much in this. I mean, Delhi is probably the star where it has many called the best EV policy in India, where they actually match incentive of the central government in EV. But at the same time, we need to look at how many vehicles we want to run on the road. So that is another angle which is adding to this problems for green initiatives. Similar thing is India is still a developing country. So our requirements for development requires a lot of things which is produce carbon. I mean, whether we like it or not. But at the same time, we at WTO and other forums, we are being penalized. So we need to make a balance on that. That look, I mean, today Americans are emitting 8 times emissions than an average Indian. So in that regard, my submission at the last would be that we need to look at how it's going to be percolated to the
lower level, grassroots level. For example, we need to look at, as Neeraj rightly mentioned, that the green technology we need to look at. Second thing, I will just touch upon that a lot of infrastructure investment and government claim that 10 lakh crores is being allocated to this. But essentially it is adding to pollution also because, roads and everything. So what is being done to have regulation in those infrastructure projects? So to me, this allocation is very, very small, not targeted to the right place. And I think more needs to be done, and probably all the states has to ramp up their initiatives to cut down on emissions. That's all I want to say. Thank you. जी आवाज नहीं आ रही शायद। नीरज सर, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं, अभी मैंने जो 5-7 मिनट पहले बोला उसमें आ रही थी, नहीं आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आ रही थी। तो मैं दोबारा बोलूं सर शॉर्ट में? जी 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 बोल दिए। मेरा पॉइंट ये था सर कि जो नीरज सर बोले थे वहीं से पिक करता हूँ कि these are 35,000 crores we are mentioning in the budget, but actually it is percolating down to 5,000 as Neeraj sir mentioned, which is rest of the things is going to petroleum companies and others. Another thing I will say that what are the state thing, how much money is given to the state, or the state is generating their own revenues to do this. And here I will like to highlight the Delhi government EV policy, which is considered probably one of the best EV policy, EV vehicle policy, in India, where they match the same subsidy or incentive as the central government. But I think the rest of the states has to do more. I mean, for example, UP has today can claim that they are having the highest number of registered EV vehicles. But if you look at the percentage wise and the size of the state, it is very, very small thing. So the idea is that we need to put our resources at the horse mouth, I will say. For example, as Neeraj sir mentioned that there is a lot of projects, infrastructure projects have been conceived, and the government claimed that in budget is 10 lakh crores have been pumped into this. But what are the environmental and carbon emission footprint resulted due to this? Second thing, at the same time, we need to look at, India is a developing country. Still, there is a lot of inequality in the society. So we need to, get an equal society. So, country like America, which emission 8 times than we cannot dictate the terms to us. So that's what our Prime Minister rightly said, that we take our own development path to do that. We will not be governed by these developed countries who already produce so much emission and now try to teach us on our cost of development. So in short, I will conclude my submission that the resources is very small. Resources is not likely targeted, and the state needs to be involved to the greater extent. Thank you. Yes, थैंक यू लोकेश जी, बहुत अच्छा आपने बताया सब डिटेल्स में। और अभी मैं आज हमारे कुछ लोगों का आई थिंक 2-3 लोग ज्वाइन करेंगे। नेट का इशू था, संजीव कुमार जी और गुप्ता जी का भी, कई लोग जो है आज ज्वाइन पता नहीं नेट के इशू से कर नहीं पाए। सो मैं रिश्का मैडम, इफ वांट टू से एनीथिंग प्लीज म्यूट कर लें अगर। रुचिका जी जी, ज्यादा तो मैं नहीं कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर जो जब नेट एमिशन जीरो की जब बात आती है और हम लोग जो हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जब हम उनको याद भी दिलाते हैं, तो दो चीजें जो वो कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए और क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए, वो बायोमेथिनेशन और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंदौर को छोड़ के और कुछ और म्यूनिसिपैलिटीज को छोड़ के
अधिकतर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट, एंड सॉलिड वेस्ट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ आल्सो द ग्रीन हाउस गैसेज एज वी नो. So mitigate करने के लिए some of the measures are there, and that requires also the decentralization of solid waste management, setting up and enabling communities, local communities to be part of the problem. और इस बारी तो UN का जो इनका है भी message, it's be part of the solution. So this is somewhere where we are finding it very challenging. In fact, as a citizens group, जैसे मैंने आपको बताया, Citizens for Clean Air and Why Waste Your Waste, we have last 9 years, we have not been able to be part of the solution of reducing the emissions. So by this, I mean to say, हम अपने घर के level में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन when we start looking at the community or at a ward level, we are not able to get the infrastructure support which can help reduce one of the most harmful greenhouse gases, methane, by setting up the smaller units of capacities of the biogas plants. Second is the way the cities are being developed and all the decisions which are being rolled out, like Neeraj ji ne abhi already bataya. We are finding a huge gap between what is being stated and what is actually happening on ground. Ab G20 ke jaise summit people members were to visit Canberra, एक museum hai Gurgaon mein, and they just did away with the pedestrian path and the cycle track, which took WRI almost 7 years to get that built. So if we are looking at all the city development plans also, they are creating the capacities for more emissions rather than reducing. So cycle tracks and pedestrian paths, that needs to be prioritized, and somewhere we need to link that up also with people wanting to feel, people feeling safe that they can step out and not be hit by the car, so or a vehicle. And both these things at citizens level movement, there's been huge advocacy, but somehow these two very simple things where we are generating our waste and we can reduce it, and we can in fact have cooling technologies such as even composting, but we are not finding that support. Definitely no support at a community level or at a ward level, which is from the state. So these were the 2 points. One is on the non-motorized traffic, building of the cities, and prioritizing pedestrian and the cycle tracks. And second is, of course, what I said about wet waste processing. Each person today in the 1 billion population we have almost generates about 200 grams or 100 grams of wet waste daily. So if you just look at providing support and solutions on that, we would be able to reduce so much of the greenhouse gases and provide some sort of neutralizing effect or mitigation. And also the horticulture waste. This particular waste stream all across cities is most unattended. Typically, what we are finding in all the cities, we Clean Air Bharat, we are on Twitter, and we get reports from छोटे से छोटे शहर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कि यहाँ पे जल रहा है, क्या करें इसका. So somewhere the intervention strategies from the municipalities on how to handle the wood portion, because only the leaf portion can be composted or some support can be provided. So somewhere the biomass from the horticulture waste stream, that needs to be definitely attended to. थैंक यू रुचिका जी, आपने दिस सेक्टर और मेरा भी जो इम्पोर्टेंट जो एनालिसिस मैंने भी जो बजट में, आई थिंक दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स मोर ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, and particularly and also the EV on all other things also there to reduce the pollution, air pollution. But the waste very, very important part of the air pollution, water pollution and land pollution, there's not much focus on the waste management, particularly in this budget is there.
because this is the main region for urban जितनी भी आपके cities हैं, towns हैं, the waste management is a major cause of the air pollution, water pollution, and land pollution, and not much incentive and things like, particularly either you go for the more on the CBG or the compressed biogas or composting or waste to energy. So this lot of viability gap funding is needed, and to reduce both the pollution and also the CO2 emissions that was it. So I think this area needs a and just to compound the problem, compound the problem also, WTE, the burn technology, not the biogas WTE, but the WTE waste to energy plant with the burn technology, जैसे कि ओखला वाला plant है, तिमारपुर वाला है, या भनवाड़ी में अब लगेगा, ये इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में डाल रखा है. तो अब क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ. जो EPR जो भी गवर्नमेंट की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स में जो एक पॉलिसी जो आई है, उसमें जितनी लार्ज मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कॉर्पोरेशंस, मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लास्टिक के, वो अपना वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट सीमेंट किल्स या WTE प्लांट्स में भेज के कार्बन न्यूट्रल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं. Are you seeing how ridiculous it is? It's like this needs to be exposed, because what you're basically saying is, and then उन्होंने condition डाली कि भैया 20% आप अपना उसको दिखलाएंगे reuse के अंदर, which actually you're giving an incentive for more plastic production. And as per the plastic waste index, जैसे अभी नीरज जी ने जो share करा था, we are looking at a 1 kg additional generation. So how can you give carbon neutral by burning, which is ash, and then you don't know what to do with the bottom ash? So that is the thing. And the second thing, जब हम कोई policy की बात करते हैं, आज की तारीख में, thanks to the social media and the digital world, everybody is aware about everything. Many people are excited to also take part in the solution process and implement the solutions. And we have showcased implementable solutions, but this decentralization of power, this is somewhere where I think is the biggest, it's like a chicken neck. So आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि वो डिसीजन आपके हाथ में ही नहीं है. डिसीजंस वो बड़े कॉर्पोरेशंस को के फेवर में जाता है जो सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस की बात करते हैं. तो जब हम बात करते हैं कि हमको इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस चाहिए, वो सॉल्यूशंस सब, क्योंकि ये सबकी दिनचर्या से रिलेटेड है, आप खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, तो सस्टेनेबल नेबरहुड्स को बनाना और अपने में एक अपने आप को संपूर्ण करना, सक्षम करना, और जिसकी हमारे प्रधानमंत्री बात भी करते हैं कि जन भागीदारी होनी चाहिए. भागीदारी एक तरफा तो नहीं हो सकती ना, आपको देना भी पड़ेगा. So who are those groups, people, so somewhere I think it has to trickle, there has to be much more awareness. सुखदेव विहार है, वो बेचारे लड़ रहे हैं साउथ दिल्ली के, आप और कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, 500,000 मेट्रिक टन्स को आप जलाएंगे और उसको आप रिन्यूएबल कह रहे हैं, जलाने की टेक्नोलॉजी को रिन्यूएबल कह रहे हैं, just so that you can just place the chimney. जैसे टोक्यो में उन्होंने 11 उनके WTs हैं, but आप उनकी emission controls देखिए. So are we going to be creating a generation of people with disability? Are we going to be pumping into pregnant women the dioxins, which even in the permissible limits, even under that, as per reports, affects the fetal development, neurodevelopmental disorders का एक बहुत बड़ा कारण है ये. So these are questions which I think उठने चाहिए, and through our elected reps we should be asking for also decentralization of power to be part of the solution. Thank you. I think this is a very important point. I think budget में the viability gap funding for the budget decentralized waste management and also decentralized waste management is lacking, and more focus should be given to not only reduce the pollution, also the greenhouse gases. This is very, very important. I think that was not much viability gap funding is there for this waste management area. So now finally आज हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सबसे एक्सपर्ट मेंबर और हमारे सबके मेंटर श्री पार्थो त्यागी सर से
कि आपके फाइनल कमेंट्स जो आप आपकी ब्लेसिंग के साथ आज की इस मीटिंग के लिए जो बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और जो हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स ने डिस्कस किया, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्यागी सर से आपके व्यूज पर। ओवर टू त्यागी सर। अनिल कुमार, ऑलरेडी बहुत अच्छी बातें हैं और बड़ी डिटेल में कही जा चुकी। ये अफसोस की बात है कि एस के गुप्ता साहब के मैसेजेस क्लियरली नहीं सुन पाए हम लोग, और नीरज त्यागी जी को रोकना पड़ा ताकि और लोगों को भी अवसर मिल सके, मगर उसके बाद भी बहुत अच्छी बातें कही जा चुकी। मैं इतना तो यकीन करता हूँ कि सोलर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि इंडिया का इनिशिएटिव बहुत ही तारीफ के लायक है और वेल एक्नॉलेज भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मगर जब बारीकी में जाते हैं, जो कि नीरज जी जाने की कोशिश कर रहे थे, या जैसे कि अभी मैडम क्या बतला रही थी, तो पता लगता है कि देखने में वो कुछ और है और असल में कुछ और है। क्लाइमेट चेंज के ही केस में ले लीजिए, इस उत्साह में कि कार्बन का एमिशन मिनिमाइज किया जा सके, हाइड्रो पावर को वो एम्फेसिस दिया जाने लगा जो कि अच्छी तरह सोच विचार से छोड़ दिया गया था। अब वो पीरियड चल रहा है दुनिया में जबकि हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट डीकमीशन किए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ जिन प्रोजेक्ट को छोड़ भी दिया गया था, देवर अबंडन, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो ये चीज बहुत ही परेशानी पैदा करने वाली है कि हम एक टारगेट दिखला देना चाहते हैं दुनिया को कि हम क्लाइमेट चेंज में कहाँ हैं, और दूसरी तरफ हम अपने ही मुल्क को, अपनी ही नदियों को, अपने ही लोगों को हर तरह से डिसएडवांटेज में डालने की कोशिश। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ कि ओल्ड व्हीकल 15 साल 10 साल एक फिगर तय कर दिए और उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। हमारे यहाँ के मैकेनिक पूछिए, जुगाड़ में और दुनिया में मशहूर थे कि 40 साल पुरानी गाड़ी को भी वो बहुत अच्छी तरह से चला सकते। एक तरफ विंटेज कार्स की इतनी इज्जत होती है जैसे किसी वीआईपी की होती है, और दूसरी तरफ हम उन गाड़ियों को विंटेज कार बनने ही नहीं देना चाहते, उनको फेंक देना चाहते हैं। ये भी नहीं देखते कि इन्हीं गाड़ियों को कोई और ऐसा एरिया है जहाँ पे कि ये चलाई जा सके। कोई जरूरी नहीं कि वो नेशनल कैपिटल रीजन में चले या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले, बट देयर आर एरियाज वेयर दीज व्हीकल्स कैन बी फ्लाइड विद within prescribed limits and with due care from the mechanics who are available in India. तो ये स्कीम जो है, ये मुझे सिवाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को मदद करने के, बाकी सोसाइटी को मदद करने की तरफ ये बिल्कुल नहीं। एक तरफ हम थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि कोई भी वेस्ट ना हो, वो भी रॉ मटेरियल रहे। उसी तरफ हम चलती गाड़ी को, जो कि रजिस्ट्रेशन से उसे डिस्कार्ड करते हैं, तो मेरी किसी तरह समझ में नहीं आता। फिर दो वर्ड्स बड़े अच्छी तरह यूज होते हैं, ईज ऑफ बिजनेस और स्पीडी डेवलपमेंट। आजकल यूपी में ही बड़ा जबरदस्त मेला लगा हुआ है स्पीडी डेवलपमेंट, और ये स्पीडी डेवलपमेंट क्या शक्ल ले सकता है, ये तो इसके ऊपर है कि जो आके ऑफर कर रहा है आदमी, उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप इन पैरामीटर्स के अंदर अपना ऑफर रखिएगा। अगर उत्तराखंड में फार्मा इंडस्ट्री आ सकती है, हाइड्रो पावर बेतहाशा बनाई जा सकती है, हाईवेज का वाइडनिंग, टूरिज्म, इन सब चीजों को इतना एनकरेज किया जा सकता है कि ईयर आफ्टर ईयर वी आर फेसिंग कैलेमिटी। तो ये सोचने की बात है कि किस जगह का डेवलपमेंट किस तरह हो। जब हम यूपी में लोगों को इनवाइट करें तो हम इसको क्लियर करें कि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज चाह रहे हैं या टेक्नो बेस्ड इंडस्ट्रीज चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चाह रहे हैं, हम क्या रहे हैं उस जगह के लिए। इसके ऊपर कुछ नहीं, ऑफर करने वाला बताएगा और उसका फौरन हमारा सौदा हो जाएगा, और फिर हम उसको उस इंडस्ट्री को हर तरह से हेल्प करेंगे ताकि वो वहां पर अनसूटेबल तरीके से एस्टेब्लिश होकर वर्क करता रहे। कितना गलत और शॉर्ट साइटेड है, देखने में लगता है स्पीडी डेवलपमेंट, बट वी आर इनवाइटिंग ट्रबल बाय नॉट प्लानिंग व्हाट वी शुड हैव एट व्हाट प्लेस। फिर ये इसकी जितनी एग्जाम्पल दी गई है कि जो चीज
जैसी नहीं है वैसी स्टेटमेंट्स में देखने को आती है। ये तो अकाउंटेंट्स बहुत साल से करते आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, मगर अब ये नेशन कर रही है विद रेस्पेक्ट टू देयर वोटर्स कि वो उसको डेवलपमेंट समझें जो कि सचमुच डेवलपमेंट नहीं है, और उसको ग्रीन डेवलपमेंट समझें जो कि एक्चुअली ग्रीन डेवलपमेंट का कॉन्ट्रेरी है। ये इस तरह का मैनिपुलेशन इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड मस्ट बी कंडेम्ड बाय एक्सपर्ट्स, and I think this particular group has no reason to have any reservation or fear in expressing its views very clearly. This is all that I wanted to say. I congratulate all those who have spoken before me by bringing out very good points. Thank you so much, sir. और आपके विद दी समराइज्ड एंड आपकी जो ब्लेसिंग पॉइंट्स है डेफिनेटली, और आज हमने देयर आर मे बी सम प्लस पॉइंट्स बट देयर आर सम लैकिंग आल्सो इन द बजट. वी नीड टू एड्रेस those issue, particularly the urban pollution and urban greenhouse gas emissions, but focused with the waste management issues. So और बहुत से issues हैं we need to address. दो जो गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन जो लाइफ है, दैट नीड टू बी मोर नीड टू बी क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन दिस इशू, सो दैट कि जब तक जो है जन जन की भागीदारी नहीं होगी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो जो हम गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स आ जाए उसका रियल ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं होगा. और आज हमारे बिकॉज टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड होता है और संडे का दिन होता है, आज हमारे सम एक्सपर्ट्स मेंबर्स को हम ज़्यादा टाइम बीच में भी हम आई थिंक हमको करना पड़ा, और पर्टिकुलरली नीरज जी तो बहुत तैयारी करके आते हैं, लेकिन उनको भी आई थिंक कुछ टाइम की वजह से और बिकॉज हम उस टाइम में कवर करना होता है तो हम नहीं कर पाए. तो नेक्स्ट है आई थिंक हम न्यू टॉपिक के साथ आज हम सभी अपने एक्सपर्ट मेंबर का, पर्टिकुलरली हमारे मेंटर सबके त्यागी सर, विवेक जी, नीरज जी, लोकेश जी, रुचिका मैडम एंड ऑल अदर हमारे जो अभी कुछ लोग ज्वाइन करके और शायद नेट की वजह से नहीं कर पाए, जो भी सबने ज्वाइन किया सबका थैंक्स करते हुए, और डॉक्टर के HCFI हार्डवेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट में हमारे जो व्यूअर्स हैं DR के अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े, उनका सबका धन्यवाद करते हुए आज की सर, हाँ प्लीज सर कहना चाह रहे हैं. मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान नहीं था कि मैं म्यूट नहीं हूँ और मैंने एक कॉल ले ली और सबको सर अरे कैसे नहीं, मैं बस ये थोड़ा सा बस आवाज आ रही थी और आप तो सर कह रहे उसमें कोई बात ही नहीं होती. कई बार क्या होता है कि हम होते हैं और हमारा जो है ये होता है कि चलिए आप बात करें, तो ये कोई सर सो नाइस सर, थैंक यू. सो थैंक्स फॉर एवरीबॉडी. विल नेक्स्ट संडे विद न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. सबको नमस्कार. एंड डॉक्टर अनिल, आई जस्ट वांटेड टू जस्ट से कि आप सबको सुन के इतनी हौसला अफजाई होती है हम लोगों को, क्योंकि आप लोग जो सच है वो आप बोल रहे हैं बिना हिचक के. और जब when I've been listening to some of the discussions, so it's not about खाना पूर्ति बस हमने कुछ बोलना है और हम यहाँ पे एक discussion होना है, but these are so meaningful, these discussions, and it only the takeaway for me is truth to power. And someone at some point in time, I'm sure the time will come when truth will prevail, because life actually is life. So and I think that's what और रुचिका जी, हमारा कंट्रीब्यूशन मे बी वेरी स्मॉल बिकॉज हम स्मॉल ग्रुप हैं, हम डिस्कस करते हैं, बट हमारा जो डॉक्टर के अग्रवाल का जो व्यूअर्स हैं वो बहुत बड़ा है, बिकॉज चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक पे से हो, और फर्दर जो शेयरिंग होती है वीडियो, दैट वाज द वी क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन दिस इशू पर्टिकुलरली. आप लोग देखिए, एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, व्हेन अ पेशेंट इज कमिंग टू यू, you first do the diagnostics and you tell the patient what it is so that he can do a holistic plan. Similarly, to use the same analogy, our cities are sick. We are therefore getting our air, our water, our soil. And if you're not going to tell us how sick we are and only do a Botox treatment, then you're not even helping the patient. And here the patient, as an analogy, is the city. So,
And I think somewhere these inhalable pollutants or what all the bad decisions and how it is impacting, I think it's a matter of time with more people speaking up about it, experts writing about it, and more medical research findings also. I think the wave will definitely come. But thank you very much. Thank you. Thank you, Ji. So thank you. इसी के साथ we'll close our meeting. Next Sunday मिलेंगे सबके. नमस्कार. जी नमस्कार. Thanks.